Hello everyone, welcome back to our channel Maxwell Study Hub. So as per our previous lecture, today we are going to discuss about the each and every structure of the ocean floor one by one in detail. So today we are going to study about the very first structure of the ocean, that is continental shelf. ठीक है, आज हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद द कॉन्टिनेंटल स्लोप. ठीक है, सो कॉन्टिनेंटल शेल्फ which is one of the very first structure of the ocean floor. ठीक है, let's discuss about this in detail. The land near the coast and submerged under the sea is called continental shelf. ठीक है, जो कोस्टल एरियाज इन द सेंस अगर आप हिंदी में बोलोगे नदी के किनारे, तो ये जो नदी के किनारे जो सबसे पहला हमारा ओशन का जो फ्लोर स्टार्ट होता है, ठीक है, और जो कि वाटर बॉडी के अंदर सबमर्ज्ड होता है, दैट मीन्स यू विल फाइंड दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इनसाइड द वाटर. ठीक है, दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज नोन एज कॉन्टिनेंटल शेल्फ. ठीक है, दिस इज द शैलोएस्ट पार्ट ऑफ द ओशन बेड. ये एक शैलोएस्ट पार्ट होता है. ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सबमर्ज्ड कोस्ट लैंड, जिन्हें हम सबमर्ज्ड कोस्ट लैंड भी बोलते हैं. क्यों? बिकॉज दे आर सबमर्ज इनटू द वाटर. its slope is gentle. इनके स्लोप जो होते हैं वो काफी जेंटल होते हैं. तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस कॉन्टिनेंटल शेल्फ. ठीक है, प्लीज नोट डाउन दिस ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स. दे आर शैलोएस्ट पार्ट, दे आर सबमर्ज्ड कोस्टलैंड एंड दे आर जेंटल इन नेचर. ठीक है, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ. The extent of the continental shelf is not uniform everywhere. ठीक है, इट डिपेंड्स. जैसे हर ओशनिक फ्लोर में, हर ओशन फ्लोर्स में ये डिपेंड करते हैं. कुछ जगह पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंडेड होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है. कुछ जगह पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ अप टू लिमिटेड एक्सटेंट तक ही होते हैं. सो दे डिफर फ्रॉम ओशन टू ओशन. ठीक है, एवरीवेयर द distance of that continental shelf, the length of that continental shelf is not uniform. Okay, its depth is up to 200 meter below the sea level. ये आपको कहाँ मिलेंगे, कहाँ फाउंड होंगे? 200 मीटर डेप्थनेस के साथ, यानी कि सी लेवल से जब आप काउंट करोगे, ठीक है, सी लेवल यानी कि जो हमारे आयत के प्रॉपरली एकदम 0 डिग्री एंगल पे हमें दिखता है. ठीक है, सो उस पर्टिकुलर एंगल से जब आप 200 मीटर इनसाइड अगर आप जाओगे तो आपको क्या देखने मिलेगा? कॉन्टिनेंटल शेल्फ देखने मिलेंगे. ठीक है, algae, plankton, etc. grow here. There is a food for fish, natural gas, mineral oil, and various minerals can be obtained by mining the continental shelf. ठीक है, so the important of the continental shelf is that this is the particular part, this is a particular place, ठीक है, structure where mining is carried out on a large scale. ठीक है, it is very useful for people who are occupied in occupation such as mining. ठीक है, because यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिनरल्स हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, हमें मिनरल्स मिल सकते हैं. यहाँ पर एल्गे, प्लैंक्टन्स, ये सारे जो वनस्पतियाँ होती है, जो वेजिटेशन, जो आपने पढ़ा होगा कि दिस ऑल आर द प्लांट्स विच ग्रो अंडर द वाटर. ठीक है, दे नीड मॉइस्चर. ठीक है, सो इन्हें ये मॉइस्चर यहाँ पर अच्छा मिलता है, यहाँ पर इनकी नरिशमेंट काफी ज्यादा अच्छी से होती है. फॉर एग्जाम्पल, मुंबई हाई लोकेटेड टू ऑन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ द अरेबियन सी. ठीक है, मुंबई हाई यानी कि जो अरेबियन सी के लगभग आसपास है. ठीक है, सो ये जो कोस्टल एरियाज हैं यहाँ पर सबसे ज्यादा माइनिंग होती है और वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है. ठीक है, सिंस इट इज अ कॉन्टिनेंटल शेल्फ, सो द माइनिंग ओवर देयर इज कैरिड आउट ऑन अ लार्ज स्केल. ठीक है, तो ये थी हमारी कॉन्टिनेंटल शेल्फ. सो इन एग्जाम दे माइट बी आस्क यू टू राइट अबाउट द राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ or describe their characteristics on continental shelf. So you all can write these points for your exams. Okay, you can see over here continental shelf which is submerged inside the water. Okay,
देन नेक्स्ट टू द कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज कॉन्टिनेंटल स्लोप, ठीक है। उसके बाद जो आगे जब हम आगे बढ़ते हैं, सो कॉन्टिनेंटल शेल्फ खत्म होते ही वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ स्लोपी हो जाता है, वहां से स्लोप्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं। सो आफ्टर द एक्सटेंट ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ द स्लोप ऑफ द सी बेड बिकम्स स्टीपर, ठीक है। स्टीपर यानी कि खड़ी चट्टान जैसे, बहुत ज्यादा खड़ी चट्टान जैसे एक स्टीपर हो जाती है स्लोप्स, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल स्लोप। सो इफ दे आस्क यू फॉर 1 marks what is continental slope, you have to write the after the extent of continental shelf the slope of the seabed becomes steeper, this is called continental slope, ठीक है। the depth of the slope is from 200 meter to 3600 meter, ठीक है, because it is next to the continental shelf. So after 200 meter if you go deeper you will get continental slope and it's extended till 3600 meter. The continental slope is narrow in nature, it's a narrow in nature, ठीक है। ये narrow हो जाता है, ठीक है। आगे जाते ही आप देख सकते हैं यहां पर कॉन्टिनेंटल स्लोप्स, ठीक है। दिस इज द स्लोप, ठीक है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज नॉट स्लोप, ठीक है, वो उतना ज्यादा स्लोपी नहीं है, इट्स अ जेंटल, बट अगर आप कॉन्टिनेंटल स्लोप बोलोगे तो दे आर स्लोपी इन नेचर, ठीक है। नेक्स्ट टू द कॉन्टिनेंटल स्लोप इज एबियासियल प्लेन्स, ठीक है। एबियासियल प्लेन्स, नाउ व्हाट इज एबियासियल प्लेन्स? when we are talking about the abyasial plane, it's a landform which is plain in nature, ठीक है। it's not slopy in nature but it lies inside the water, ठीक है। it lies inside the water, it's a part of the structure ocean floor, structure of the ocean floor. So let's study about this. Beyond the continental slope lie the abyasial plain, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? abyasial plain आएगा, which are the flat part of the seabed. If questions will be asked you about which is the part which is flat in nature in the inside the seabed, ठीक है। so what will be the answer? It will be abyasial plain. Abyasial plain is a part of the ocean bed which is flat in nature, ठीक है। it's a flat plane like structure, okay। the abyasial plains consists of various submerged landform like hills, plateaus. अब जितने भी hills हैं, जितने भी plateaus हैं जो आपको water body के बीचों बीच देखने मिलता है, land के आपको mountains देखने मिलते हैं, water के बीचों बीच जो lands वगैरह देखने मिल रहे हैं, तो वो सारे land, वो सारे hills, वो सभी के सभी abyasial plain के ऊपर है। यानी कि abyasial plain is acting as a base for hills and mountains which is there inside the water, ठीक है, जो आप देख सकते हो। So we have covered continental shelf, continental slope and abyasial plain. So अब तक के लिए इतना बस करेंगे। नेक्स्ट हम हमारे अपकमिंग लेक्चर में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द माउंटेन्स एंड हिल्स, ठीक है। और इसी के साथ हम स्ट्रक्चर ऑफ द ओशन फ्लोर के लिए और धीरे धीरे आगे हम हमारे चैप्टर्स के साथ बढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए again I would like to suggest to you, I would like to recommend you, please jot down the points, make the proper notes, ठीक है, and start studying for your examination, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए आपको करना क्या है? प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।